Hello, good evening everyone. Let's wait for someone to join. Dr. Nikki said it is there. Dr. Nikki, are you able to join? Hello, Dr. Nikki. Hello, ma'am. Good evening. I think Dr. Saranjit. Hello. Hello, Dr. Saran, are you ma'am. Hello, there? ma'am. You are not audible, Dr. Nikki. Yes. Yes. Am I audible? Yeah. It's fine. I think Dr. Saranjit is not able to join. I have already joined. Okay, you are not visible to me. Okay. एक बारी और ज्वाइन करूं क्या? ट्राई करो एक बार. I think you have to approve her request. I had approved already. Uh, Okay. there are no requests. डॉक्टर निकी, आप देख पा रहे हैं डॉक्टर सरन को? नहीं मैम, नहीं उनको ना? नहीं देख पा रही हूँ. नहीं. Let me invite once more. We invite. Dr. Saran, are you there? मैम कट करके दोबारा हम लोग स्टार्ट करें क्या? If it's not चलिए एक बार दोबारा स्टार्ट getting करते हैं approved. ऐसे. आई थिंक तभी हो Sure. पाएगा. Yeah. Dr. Saran, are you there?
She is unable to join still. Oh, yeah. She has Hello. joined, I think. Hello. But she is not Hi, visible. Dr. Nikki. How are you? Hello, ma'am. I'm good. Good evening. How are you? I'm good. Hello, Dr. Ratna Soni. Good evening. Let's start. Yeah. ओके गुड इवनिंग एवरीवन. आज हम डॉक्टर निक्की के साथ हैं. लेट मी इंट्रोड्यूस हर. डॉक्टर निक्की सेठ. शी इज BHMS PG होम्यो फ्रॉम लंडन. She is a certified neuropsychologist and practicing at Manovriti Homeopathy Clinic, Asansol, West Bengal. She specializes in holistic healthcare for acute and chronic disorders using classical homeopathy. She explores the neuropsychological mechanisms after affecting health and behavior. And she is the published author of Unlocking Wellness: The Hidden Connection Between Stress and Cortisol. She has contributed articles to homeopathic platforms and recently completed an Instagram series on the neuropsychiatric essence of 21 polycrest remedies. Wow, ये मुझे नहीं पता था कि you are an author too. Over to Dr. Saran. ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है. न्यू Yeah. जनरेशन. I think मैंने कभी बोला भी था इनको. Yeah. Thank you so much. You're really a young and dynamic force in homeopathy. Yeah, truly. You Thank you you are so redefining much. holistic health, and healing power and expertise you are using in neuropsychology is commendable. So Thank you, ma'am. today's topic you are choosing is why women are women. Why women? Exploring the gender bias in autoimmune thyroid disorders. So tell me about what is autoimmune thyroid disorders and how do they affect the body? See, autoimmunity is a condition where the immune system of the body attacks thyroid gland is situated here. It's a butterfly-shaped organ. So what happens that the immune system attacks the thyroid gland thinking the immune system attacks it thinking that it's foreign. So this condition is known as autoimmune thyroid disorder, and it can lead to two types of diseases. Either it's Hashimoto or it's Grave disease. Hashimoto is hypothyroidism, whereas the THS levels are elevated, and Graves disease, where the TSH levels will fall down below the normal. That is hyperthyroidism. So that is autoimmune. Am I audible, ma'am? You are not audible, Dr. Saran. I'm asking why are women more prone to this than men? Sorry, can you repeat the question? Why are women more prone to this autoimmune thyroid disorders than men? Yeah. Women are prone to many diseases because there are a lot of factors that govern the possibility of a disease in a body. So, Okay. multiple reasons, the first one being the hormonal cause. Because since women undergo 4 major hormonal shifts in their life, the first one is puberty, the second one is pregnancy, then you have postpartum, post-pregnancy, then you have menopause. Yeah. So these 4 major hormonal events in life trigger the estrogen and progesterone that is predominant in a woman's body. Then you have chronic stress, you have other genetic and epigenetic factors also, which make women prone to this autoimmune condition, especially thyroid. Yeah. So, what are the basic causes? Why do we have this thyroid disorders nowadays? Why is it more? Why do we find more of the thyroid disorders? Why are people suffering from thyroidism? What I have seen in my clinic, most women and what we know around our environment also. See, we have a list of, a history of our grandmothers, great grandmothers. They suffer from chronic stress. So, this chronic stress response is something which dysregulates the cortisol functioning in the body, because of which, again, the HPA axis, which we know, which is inside the pituitary of our brain, it triggers an autoimmune response. And that is why
thyroid is the most common disorder which we see in women nowadays. Okay. Okay. What are the early warning signs for this? Sorry, Early you were not warning audible, ma'am. signs for what are the early warning signs? If you can say that, how can we see that yes, we are suffering from thyroid? What are the early warning signs you suggest? Okay, so the early warning signs can be anything. It can be just anxiety, or it can be hair fall, just hair fall, or Okay. dry skin, brittle hair, gaining weight abruptly or losing weight abruptly. So these things, what Okay. happens that when we are diagnosed with anxiety, we have rounds with the psychiatrist, and if we have dry skin, dry hair, I have seen in my women in my clinic, they are visiting the dermat, they are finding solution, but there is no solution because the root cause is not being addressed. So the cause, you cannot call it a warning sign, but these are subtle symptoms which, when diagnosed earlier, can be managed very well in the long run. Okay. Right. So, what do you suggest how homeopathy can help in this? Again, the last line, addressing the root cause. So homeopathy is all about addressing the root cause. So homeopathy has many constitutional treatments which is always personalized. What we have seen is that everyone's stress is personalized. The stress can be due to grief, the stress can be due to any trauma, it can be due to financial loss, or it can also be maladjustment, which we see in a remedy known as thyroidinum. So this maladjustment in the major hormonal shifts of a woman's life, that is pregnancy, puberty, menopause, these are all the conditions which we address in homeopathy. We have different remedies for different conditions where we always address the cause and not the effect, because the symptoms you can always suppress with synthetic thyroxine. But what about the cause? So homeopathy comes here where a person's well-being is managed holistically. Mm-hmm. So that is why homeopathy always boosts up the immune system and overall well-being can be managed with it. Dr. Soni, do you want to ask any questions? Yeah, I have one question. हम लोग कई बार अपने पेशेंट्स को बोलते हैं कि आपका इतना स्ट्रेस है, उसकी वजह से भी हार्मोन्स लेवल जो है वो डिस्टर्ब होते हैं, और सबसे पहला हार्मोन जो है वो अगर हम बात करें तो थायराइड होता है। तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा लोगों को अपनी नॉलेज शेयर करें ताकि उनको पता चले इस बारे में भी कि सिर्फ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से भी थायराइड हार्मोन जो है वो अफेक्ट होते हैं। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से सबसे पहला हार्मोन थायराइड नहीं, सबसे पहला कॉर्टिसोल इफेक्ट होता है। कॉर्टिसोल डिसरेगुलेशन की वजह से जो एचपीए एक्सेस होती है उसमें जो एड्रेनल ग्लैंड है विच प्रोड्यूसेस द कॉर्टिसोल हार्मोन, इट गोज अंडर क्रोनिक स्ट्रेस। सो क्रोनिक स्ट्रेस में क्या होता है ना कि बॉडी में बहुत सारी इम्यून रिस्पॉन्सेज ट्रिगर हो जाती है, जिसमें रिप्रोडक्टिव फंक्शन कम हो जाता है, डाइजेशन कम हो जाता है, बिकॉज जब हम क्रोनिक स्ट्रेस में होते हैं तब बॉडी एक सर्वाइवल मैकेनिज्म में चली जाती है। द गोल ऑफ द बॉडी इज टू सर्वाइव। सो सर्वाइवल में बाकी सारे फंक्शंस डिक्रीज हो जाती है, जैसे डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, इम्यूनिटी, विच द बॉडी थिंक्स दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। सो स्ट्रेस इस तरीके से एक कैस्केड ऑफ रिएक्शंस को ट्रिगर कर देता है। सो जिसकी वजह से फिर डिफरेंट डिजीजेस का एक विशियस साइकिल में इंसान फंस जाता है, बिगिनिंग विथ थायराइड, देन अर्थराइटिस, देयर आर सेवरल एसएलई, बहुत सारी डिजीजेस हैं ऑटो इम्यून जो एक विमेन सबसे पहले और सबसे ज्यादा सफर करती हैं। Yeah, exactly. Then what is the role of iodine in this? Sorry? Iodine also uptake, they ask ना टाटा सॉल्ट लीजिए, आयोडीन है उसमें। आयोडीन क्या करता है ना कि आयोडीन जो थायराइड, एक्टिव थायराइड हार्मोन है, उसके कन्वर्जन में हेल्प करता है। सो इन डिफरेंट रीजन्स जहां पे थायराइड कम है, आयोडीन कम है डाइट में, वहां पे ज्यादा देखा जाता है कि थायराइड डिसऑर्डर्स हो गए हैं। एंड कई लोगों को इट इज नॉट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस,
Some people have thyroid just because of iodine deficiency also, and that can be managed just with iodine in the diet. There are other things also that should be given in the diet, like selenium, magnesium, vitamin B12, vitamin D again, which is seen in thyroid patients to be very low. So Mm-hmm. diet has a very big role in reversing thyroid. ओके Okay. कई बार पेशेंट आते हैं बोलते हैं कि जी सेंधा नमक ही खाना है बहुत अच्छा होता है और हम लोग उनको बोलते हैं अकेला सेंधा नमक खाएंगे तो और ज्यादा आप आयोडीन डेफिशिएंट हो जाएंगे डेफिनेटली, इस पर भी थोड़ा बिकॉज बताएं आप टाटा नमक में देश फोर्टिफाइड होता है का नमक। आयोडीन, और कई लोगों में कई लोगों में ये प्रॉब्लम हो जाती है बिकॉज ऑफ यूजिंग जस्ट सेंधा नमक. Yes. Yeah, in hyperthyroidism, I think we should avoid iodized salt. Otherwise, we should take iodized salt, right? Yeah. The TSH हाइपर levels में are मना low हो there. जाता है ना. So, एक क्वेश्चन और और है कौन कौन सी मेरा ऑटो डॉक्टर इम्यून डिजीजेस होती हैं? पेशेंट कई बार SLE आता है जी हम लोग तो आपकी होम्योपैथी की थायरोडिनम 3x ले रहे हैं लेकिन थायराइड तो इससे ठीक नहीं हो रहा है तो मैं चाहूंगी आप ये मिथ भी बस्ट करें कि हाँ कि जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशनल या सिम्टोमेटिकली कुछ नहीं लेंगे तब तक आपको इफेक्ट वो नहीं आएगा जो आप चाहते हैं. डेफिनेटली. मैम आपका क्वेश्चन क्या है? यही है कि थायरोडिनम 3x क्यों काम नहीं कर रहा है. कई बार हमारे लिए क्योंकि समझाना again थोड़ा हम मुश्किल होता है. मैं चाहती हूँ कि अभी आप इस मिथ को बस्ट करें. इसीलिए नहीं कम हो रहा है बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच वहां पे नहीं फॉलो किया जा रहा है. अगर वो लोग थोड़ा सा पेशेंस रखे, जो बीमारी को होने में 10 साल लगता है वो आप 10 महीने में ठीक नहीं कर सकते हो. इट विल टेक टाइम. एंड जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट हम लोग ले रहे हैं उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखे. विथ थायरोइडिनम कैन बी अ सपोर्टिव ड्रग, नॉट द प्राइमरी ड्रग. Primary drug can be constitutional and it has to be managed with other symptoms of hypo or hyperthyroidism also, जिसमें symptomatic approach के लिए हम और भी homeopathic medicines दे सकते हैं. like anxiety है तो काली फॉस, या जिस भी टाइप की, अगर अर्जेंटम टाइप की एंजाइटी है तो अर्जेंटम दे दिया, या काली फॉस टाइप की एंजाइटी है तो वो दे दिया. वो डिपेंड करता है पेशेंट पे, कंप्लीटली वो पर्सनलाइज्ड कस्टमाइज्ड होता है, जो कि हमें हमेशा एक केस टेकिंग के बाद ही समझ आता है. There are no specific medicines. Over to डॉक्टर सर. नहीं, बहुत इंसाइटफुल है ये आपका जो है. I think there are some questions which I am not able to see. Just a minute. Okay, first question I तो can diet see को one लेकर ही Which है. homeopathic medicines are helpful in hyperthyroidism? Hyperthyroidism. Hyper में body lean and thin हो जाती है. So the first remedy that comes to my mind is iodum. Iodum is a very good remedy in hyperthyroidism. Then exophthalmic goiter, which is a sign in hyperthyroidism, उसमें भी मतलब approtanum है. Again हम root cause को अगर देखते हुए समझे पेशेंट क्या कहना चाहता है, तो there are many remedies where we cannot say which specific homeopathy remedy can be given. Iodum is a great remedy. Then we have Spigelia, which I have given. Thyroidinum 3x, Thyroidinum 200 also works in both hypo as well as hyperthyroidism. Okay. Any diet management you would like to suggest in hypo? Yes. Diet management plays the primary role in reversing thyroid. Deficiency of major vitamins is seen in thyroid patients like selenium, magnesium, you have vitamin B12, iodine. So these has to be managed with the diet. Wholesome diet हमेशा, because Indian culture में है, Indian tropical इस climate में है, तो Indian food को ज़्यादा include करना, wholesome food, different colors का food, जितना कलर्स प्लेट में दिखता है प्लेट उतना बेटर होता है. इंक्लूडिंग कर्ड इन द डाइट, इंक्लूडिंग पल्सेस, एवरीथिंग. Also some people are allergic to gluten in thyroid disorders. So gluten free wheat also helps in thyroid patients. Okay. Somebody suggests that soyas intakes, broccolis, they should be avoided in this. Is it right? No, this is a myth. Actually, Even peanuts पहले के ज़माने, yeah, peanuts too. Yeah. Peanuts, I would say, yeah. वो मूंगफली, which is available during the winter months, वो थोड़ा सा avoid मैं करवाती हूँ अपने patients को भी. But
cruciferous vegetables जिसको बोलते हैं, which I think अगर cook करके खाया जाए तो there is no issue in consuming those, because हम raw Okay. नहीं खा रहे हैं, और उसमें बहुत yes, उसमें antioxidants और बहुत सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है which again helps in thyroid disorders. Thank you, Dr. Nikki. That was very insightful. Yeah. Thank you. Anything you would like to add? No, that's it. Thank you so much for giving me this बहुत opportunity. insightful था आपका, थैंक यू वेरी मच. Thank हम you आपको so much दोबारा for जरूर taking बुलाएंगे. time out for us. Yeah. Thank you for inviting me. Yeah. Thank Okay. you. Okay. इसके साथ ही See tomorrow back अनाउंसमेंट with भी some करते other हैं, doctor अगर too. कोई भी डॉक्टर आपके ऑनलाइन सेशन लेने चाहते हैं तो आप डीएम कर सकते हैं, या हमारा नंबर है इस पर ही बायो में, तो आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं. ओके, Yeah. लेट्स मीट अगेन. ओके, बाय बाय. Yeah. थैंक यू Bye. वेरी Thank you, मच. Dr. Nikki. ओके, बाय. Bye. Bye.